ओरुपा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को नवम श्रेणी छात्र छात्री मानू स्वागतम। आज वीडियो रे आमे उत्कर्ष गणितर कार्यफर्द 10 को करिबा। यह फाउंडेशन फेज अंतर्गत अटे। एठी अछि दशमिक संख्या गुड़ी करे गुणन और हरण। दशमिक संख्यार किपरि गुणन करिबा आउ किपरि हरण करिबा ताहा एठी आमे शिखिबा। प्रथमे क नंबर अच्छी देख तले दि जाइथिबा प्रश्न गुड़ी को भग्न संख्या रे परिणत करी गुणफल निर्णय कर। परे ताकू बिना भग्नांश रे गुणन करिया पाई चेष्टा कर। तापरे उत्तर को परीक्षा कर। प्रथमे कौन करिबा भग्न संख्या रे परिणत करिबा तापरे आमे साधा गुणन करिबा। हला देख आमको प्रथमे कौन दिया जाइछि। प्रथमे आमको दिया जाइछि एठी देख एठी अछि देख 0.05 अछि ताको केते सहित गुणन करिबा 0.2 सहित गुणन करिबा। प्रथमे आमे कोन करिवार अछि ताको भग्नांश करिवार अछि। देख एठी भग्नांश करा जाइछि देख तळे जे 0.05 एठी देख दशमिक परे कोन अछि दशमिक पर 0 आउ 5 दुईटी संख्या अच्छी तेणु एपटे आम या कौन करवा देख ये आम लिखा 5 विभक्त 100 लिखा। ये दशमिक पाई कौन करा जाए एक निया जाए और दुईटी संख्या अच्छी बोली आम ता तले ये कौन कर दुईटी शून्य नेलु अर्थात 5 विभक्त 100 है। ठीक अच्छे तापर देख ये 0.2 थिला ताकू कौन करवा एपटे लिखा 2 विभक्त 10 दशमिक परे केवल 2 गोटे संख्या थिला तेणु आमे एक रे कौन कलु गोटे शून्य देलु अर्थात आमे 10 लिखिलु। वर्तमान आमे कौन करिबा गुणन करिबा 5 आउ 2 या को गुणन करिबा 5 दुणे हे गला 10 तळे को केते थिला देख तळे थिला एठी थिला 100 एठी थिला 10 गुणन कले केते हला 1000 हला। ऊपर केते अछि ऊपर अछि देख 10 अछि। ठीक अछि एठी कौन करिवो आमे हर को देखिबा एक रे अछि 3टी शून्य तेणु आमे दशमिक 3टी संख्या पूर्वर देवा एठी देखो 0 1 0। ठीक अछि 3टा गणिबो 1 2 3 तापर दशमिक देखि एठी तमे 0 लिखिबो अर्थात ये केते हला ए हे गला 0.010। एटा हला कोन भग्नांश। एपटे देखो ऊपर आमे कोन करिछु एटा तमे लक्ष्य करो ऊपर करा जाइछि 0.05 गुणन 0.2 समान 5 दुणे 10 करिवो आउ 0 पाई लिखिबो 0 एठी अछि 0.05 दशमिक परे 2टी आउ दशमिक परे गोटिए एणु एठी दशमिक परे 3टी अंक रहिबो। परवर्ती प्रश्न देख परवर्ती प्रश्न रे कोन अछि परवर्ती प्रश्न रे अछि 0.05 गुणन 0.02 अच्छी देख हला एटा अच्छी याकू एठी आमे लिखिबा 0.05 गुणन 0.02 एटा दशमिक पर 2टी अंक तेणु 5 रे कोन करिवो 5 विभक्त 100 करिवो अर्थात 2टी अंक माने 1 रे 2टी शून्य देबो। एठी मध्ये देख 2 रे कोन अछि सॉरी 0.02 अछि ना दशमिक पर एठी भी 2टी अंक तेणु आमे 2 विभक्त 1 रे कोन करिबा 2टी शून्य देबा हला। तापरे 5 आउ 2 गुणन करिके 5 दुणे 10 करिबा हर रे एठी थिला 100 एठी थिला 100 ये गुणन हे कि कोन हला 10,000 हे गला। ठीक अछि तो एक रे केतोटी शून्य रहिला तळे 4टी शून्य अछि कि नै तो हमको 4टी अंक हला 1 2 3 4 हमको 4टी अंक पुरे एठी आमे दशमिक देबा हला अर्थात दशमिक पुरे सेपटे 4टी अंक रहिबे हला। ए अंक गुडी को देखिलो जेते आंसर अछि एठी मध्ये सेते अछि तेणु उत्तरटा ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देख परवर्ती प्रश्न रे केते अछि एठी देख 0.05 आउ 0.002 अछि हला एटा अछि
याकू एठी लिखिबा 0.05 ଆଉ 0.002 ताको भग्नांश रे परिणत करिबा 0.05 माने 5 रो तळे केते लिखिबा 100 दुईटी अंक रे दशमिक तेणु आमे एठी दुईटी शून्य देबा एकरे हला तापरे एपटे कोन करिबा दशमिक पर 3टी अंक थिला देखो तेणु आमे एठी 2 विभक्त कोन करिबा एक रे 3टी शून्य देबो अर्थात 1000 लिखिबो याकू आमे गुणन करिबा गुणन कले 5 दुणे 10 हैला ए 100 आउ 1000 हैला एठी हैला 1 लक्ष हे गला देखो हैला एक रे केतोटी शून्य अछि लक्ष्य करो एक रे अछि 5टी शून्य अछि देखो तेणु एठी तमे दशमिक परे सेपटे 5टी अंक निहाती भावरे रखिबो ठीक अछि तापरे प्रश्न केते थिला एठी देखि दियो 0.005 और 0.02 हैला एटा को लक्ष्य करो ताउ तळे एठी 0.005 परवर्ती प्रश्न ठीक अछि आउ एपटे अछि 0.002 अर्थात एपटे 0 पर 3टी संख्या दशमिक पर एपटे 3टी संख्या हैला तो एपटे कोन हबो दशमिक पर तुमको 6टी अंक रखिबा को पड़िबो तळे देखो ताकू करा जायछि प्रथमे कोन करा गला दशमिक को एठी भग्नांश करा गला भग्नांश को गुणन करिक पुणे थरिया को दशमिक करा जायछि याकू देखो आउ ए प्रश्न को मध्य देखो हला दशमिक पर 3टी अंक थिला एठी मध्य दशमिक पर 3टी अंक तेणु एठी रखिबो 1000 ये लिखिबो 1000 एठी हे गला केते 10 लक्ष हे गला 6टी अंक पर दशमिक तेणु तुमे भलो कि दशमिक देखि एठी केतोटी अंक रहिबा कथा 6टी अंक रहिबा कथा ये गला तापरे आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा ए प्रश्न रे कोन अछि देखो तळे दिया जायथिबा दशमिक संख्या गुडीकर भाग करिया पई समान प्रक्रिया व्यवहार करो एठी आमे हरण करिबा याकू मध्ये आमे सही प्रणाली रे करिबा प्रथमे कोन करिवार अछि प्रथमे आमे दशमिक जो संख्या अछि ताको आमे भग्नांश करिबा प्रथमे थिला देखो 15 हरण 3 समान 3 5 15 लिखि दबो एठी लिखिबो याकू केमती दशमिक करी दशमिक तो ये नाही तेणु याकू मु कोन करिछि सेमिति ही लिखि देइछि ए जो हरण थिला ताको एपटे मु गुणन कली ठीक अछि गुणन कली तापर एठी 3 थिला 3 को कोन करा गला ए जो 3 देखुछो ताको मु एठी कोन करिछि तार व्युत्क्रम नै जाइछि हला जेहेतु हरण को गुणन करिछि एपटे व्युत्क्रम नेबो 1 विभक्त 3 लिखिली ए कोन हला ए 3 आ ए 15 3 5 15 ठीक अछि एठी एटा सॉरी भूल हे जाइछि एठी तमे केते लिखिबो एठी तमे 5 लिखिबो हला उत्तर हेबो 5 एठी भी देखो 5 अछि एठी भी तमे कोन करिवो 5 लिखिबो सेटा भूल रे 15 हे जाइछि ताकू लिखिबोनी 5 लिखिबो तापरे देखो परवर्ती प्रश्न रे कोन थिला परवर्ती प्रश्न रे थिला एठी थिला देखो 1.5 हरण 3 ये हे जीवो 0.5 हरण कले हला ए हरणटा केमती करिवो जे आमे साधारण करू एमती करिवो देखो 1.5 अछि ताको आमे हरण करिवार अछि केते रे आमे ताको 3 रे हरण करिवार अछि जेहेतु एठी 1 अछि 3 1 3 तो आमे नै पारिबानी एठी कोन करिबा 3 0 0 नै जीवा हला 1 रु आमे 0 को विजोग कले एठी पाइबा भागशेष 1 तापर देखो ये दशमिक अछि तेणु आमे एपटे दशमिक दे दबा आ एपटे लिखिबा केते 5 लिखिबा 15 हे गला तापर आमे एठी 3 5 15 लिखिबा भागशेष होबो केते 0 एटा हला हमर साधारण हरण किंतु हमको कोन करिवार अछि हमको करिवार अछि दशमिक संख्या को भग्नांश करिवार अछि 1.5 थिला याकू कोन करिवो 1.5 ऊपर लिखिबो लबरे 15 लिखिबो आ जेहेतु दशमिक पर 5 अछि अर्थात गोटे संख्या अछि
ଏକରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବ 10 ହେବ। ଆଉ ଏଠି ହରଣ ଦେଇକି କେତେ ଲେଖିଲ 3 ଲେଖିଲ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିବ 15 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ ହରଣ ଥିଲା ନାଇଁ କି ତାକୁ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ଗୁଣନ କରିବ। ଗୁଣନ କଲ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଥିଲା ତାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଲେଖିବ ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 3। ଯଦି ତୁମେ ହରଣକୁ ଏପଟେ ଗୁଣନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଲବ ଆଉ ହରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏପଟେ ଏଟା 1 ବିଭକ୍ତ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ 3କୁ ଆଉ 15କୁ କାଟିଦିଅ। 3 ପଞ୍ଚା 15। ତ ଉପରେ କେତେ ହେଲା 5 ଆଉ ତଳେ କେତେ ଅଛି ତଳେ ଅଛି 10। ୟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲ। ଏକରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ନା ତଳେ 10 ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଦଶମିକ ଅର୍ଥାତ୍ 0.5 ଲେଖିବ ହେଲା। ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା 0.15 ହରଣ 3 ଥିଲା। ତାର ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ 0.05 ହେବ। ଆମେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି କରିବା ୟାକୁ କିପରି କରିବା ଦେଖ। ଲେଖିଲ 0.15 ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି କେତେ 3। ଏଇ ଯେଉଁ 0.15 ତାକୁ ଲେଖିଦେବ 15 ଲେଖିବ। ଦଶମିକ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଥିଲା ଏକରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 2ଟି ଶୂନ ଦେବ। ହରଣ 3 ଅଛି ଏପଟେ କ'ଣ କରିବ ହରଣକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଲ ହେଲା। ଆଉ 3କୁ ବଦଳେଇକି 1 ବିଭକ୍ତ 3 କରିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ 3 ଆଉ 15 କଟିଗଲା। 3 ପଞ୍ଚା 15 ଉପରେ ରହିଲା କେତେ 5। ଏ ହର ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଠି 100 ଏଇଠିକି ଆସିଲା ହେଲା। ଏକରେ 2ଟି ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ଦଶମିକ ପରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବ। ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ 0.015 ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇଠି ଏଇଟା କରିଦେବ ହେଲା। 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତୁମେ 3ଟି ଶୂନ ଦେଇକି ୟାକୁ କରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଶୀଳନୀକୁ ତୁମେ ସମାପ୍ତ କରିବ।